So if you don't have a study partner or an accountability partner, become one for yourself. Now it's just around 30 days left for the NEET PG, and we have to be very strict on ourselves. We have to inculcate self-discipline no matter what. It's these 30 days or next 1 year or maybe never, right? So we have to give our best to whatever we can. For this, it's very important to be accountable to what you are studying. At the end of the day, you should be able to say yourself कि हाँ आज मैंने ये सब किया है, आज मैंने इतना पढ़ा है. And one thing I am sure we all will agree to is, and the one thing that we all will agree to is that आप कभी भी स्टार्ट किए हो, इट्स नेवर टू लेट. बट जब आप एग्ज़ाम देते हो, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम you get a flashback of all the events that you have done in your preparation phase. जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हो, you get the answer yourself. तो अगर आपने सही से मेहनत की होगी, if you have been honest in your preparation, आपको वो flashback आएगा. And no matter what the results are, वो flashback, वो खुद का honesty ही important होता है. So this is a video on how we can become the accountability partner of ourselves and how we can give the best in the remaining days of our examination. Now this is based on the punishment and reward technique, and it is a kind of strict self-discipline practice. You don't have to do many things, but if you don't do these 5 things, you will be punished. If you do, you will be rewarded. As simple as that. क्या क्या work है? First work is that between 8:30 a.m. to 8:45 a.m. you have to be at your desk. Why I have specified this time is, आपको 8:30 तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे होना होगा if you want to sit for the NEET PG exam, because 9 o'clock से exam start है. So I have purposefully mentioned this time. ठीक है, घर पे हो तो 8:45 हो सकता है. So 8:30 to 8:45 a.m. you have to be at your desk. If you are at your desk, it's natural. अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हो तो ही आप 8:30 के बाद से 9 o'clock से आप एग्जाम दे पाओगे, राइट? अगर 8:30 तक आप सेंटर नहीं पहुंचे तो आप 9 o'clock से टेस्ट. So if you can come at your desk at 8:45 a.m. you will be allowed to study in the morning half, that is 9 to 12:30. And if you don't come, you will not be allowed to study. ऐसा नहीं चलेगा कि मैं 10 बजे आके पढ़ रहा हूँ, 11 बजे आके पढ़ रहा हूँ. No, you have to come at your desk at 8:30, तभी आपको मॉर्निंग हाफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ये आपका मॉर्निंग हाफ रोज़ ऐसे चला जाएगा ना, तब आपको अहमियत समझ में आएगी कि नहीं, अब तो मुझे 8:30 बजे डेस्क पे आना ही है, तभी मैं पढ़ पाऊँगा. I know it's strict, but nothing else can be done now. I'm sorry. Second is, if you are able to study between 9 to 12:30, I mean undistracted, focused study for 3.5 hours, only then you will get lunch, or else not. Okay? Yeah. Third is minimum of 100 MCQs per day. I have not specified any time for this. It can be any time of the day, but just at the end of the day you should have to do at least 100 MCQs per day, because ultimately ये एक MCQ एग्जाम ही है, तो MCQ प्रैक्टिस तो होना ही है. If you are able to do that, you will be getting a reward of watching television. Now आप यहाँ पे कुछ भी reward रख सकते हो जो आपको करने में अच्छा लगता है. For me, television is mood stabilizer, so I put that into it. You can put anything else. Now, if you don't complete this 100 MCQs, will not be allowed to sleep. जब तक आप नहीं सोगे, जब तक आप नहीं 100 MCQs करोगे, आपको सोने नहीं मिलेगा. Fourth is 10 hour of undistracted study. ठीक है, वाया टाइमर खोल के ही होना चाहिए. मैं तो ठीक है पढ़ रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है मैं पढ़ा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. टाइमर में दिखना चाहिए कि हाँ आपने 10 hours पढ़ा है. If you do this, you will be getting a reward of another
mood stabilizing activity of yours. I have put YouTube shorts and WhatsApp into it. और अगर आप ये नहीं कर सकते या आपने नहीं किया है 10 hours of study, आप सो नहीं पाओगे. It's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock. I don't know. What you have to do is complete this 10 hours. And lastly is a choti copy. This is the biggest weapon that we all have, right? This is what we have been preparing for so long. So yeah, if you do study choti copy any time of the day, okay, you'll be getting the reward of sleep, because मुझे सोना भी बहुत पसंद है. So basically these three are the mood stabilizing activities. तो अगर मैंने छोटी कॉपी को पढ़ा है तो मुझे सोने मिलेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वो छोटी कॉपी की पेज को मैं फाड़ दूंगी. आई नो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट बट आई हैव टू डू दैट. जब मैं छोटी कॉपी नहीं पढ़ूंगी, नेक्स्ट दिन मैं उस पेज को फटता हुआ देखूंगी, अपनी मेहनत को पानी फिरते हुए देखूंगी ना, तब आई थिंक मुझे समझ आएगा कि नहीं वो करना है. सो टुडे आई हैव बीन एबल टू कम एट माय डेस्क एट 8:45. सो या, बट आई वाज नॉट एबल टू स्टडी फ्रॉम 9 to 12:30. तो वो नहीं हुआ है तो मैं लंच नहीं कर सकती. तो पहले मैं वो 3.5 hours पढ़ाई करूँगी, उसके बाद ही मैं लंच करूँगी. लेट्स सी हाउ फार आई कैन डू इट, बट आई hope I'll be able to do it, because ये 30 days मुझे करना ही है. I have to do it and I'm sure you should, you shall also be doing. All the best to both of us. Happy learning.